हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल एक नई शुरुआत का वक्त होता है। जो कुछ भी चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आपने 2024 में फेस किए, उन्हें एक एक्सपीरियंस की तरह देखो और उसे सीख लो। इस नए साल का हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, बस हमें उसे ग्राब करना है। सोचकर देखो, एक एस्पिरेंट के लिए नए गोल्स सेट करना और उन पर काम करना कितना जरूरी है। सो हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी ही आपका सक्सेस का फॉर्मूला है, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, विनर्स आर दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। मतलब अगर आप कभी हार भी जाते हो तो उसे आखिरी समझ के ना बैठे, उठिए और फिर से अपनी गोल्स की तरफ मेहनत करिए, राइट। सो लेट्स बिगिन। आज का सेशन में हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6B के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर, फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर फॉर December 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 स्टूडेंट्स, राइट। एंड इस सेशन का हाईलाइट क्या है? पहले सजेस्टेड आंसर्स को समझना, जो आपको परफेक्ट आंसर फ्रेम करने में मदद करेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और कंटेंट क्लैरिटी को और भी बेटर करेगा। दोस्तों, ये पोस्ट एग्जाम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। आप एग्जाम दे चुके हो December 24 का, लेकिन अब समझना है कि कैसे बेटर आंसर्स लिखने हैं और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है। ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ जितने बार प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस से ही आती है, राइट। एंड सोच कर देखो, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो एक महीने में कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर एक साल तक ये कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप अपनी ड्रीम्स के कितने करीब पहुंच जाओगे, राइट। सो दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर कि छोटी छोटी मेहनत से ही बड़े गोल्स जो है वो अचीव होते हैं। इसलिए अब चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर का 6B। एंड नए साल की पहली क्लास को प्रोडक्टिव बनाते हैं। लेट्स मेक 2025 योर ईयर ऑफ सक्सेस, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 6B। जो सिक्स क्वेश्चन नंबर 6B है, 6B के अंदर अगेन डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज what is understood by abuse of dominant position as per the provisions of the Competition Act 2002 and state the provisions of the Banking Regulation Act 1948 relating to disposal of non-banking assets, right। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क्स एंड सेकंड वन जो है वो क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही 7 मार्क्स को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, राइट। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, राइट। तो ये जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, इस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बार लॉ के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर द कंपनी एक्ट 2000, ये जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन रेफर्स टू प्रैक्टिस वेयर ए डोमिनेंट फर्म इन द मार्केट engage in behavior that distort competition and harm the market or consumers. Okay, and a firm is considered to be a dominant position if it holds significant market power, allowing it to control price or output in the relevant market. Okay, this is called abuse of dominant positions, right? And this include actions like unfair pricing, refusal to supply goods or services, or creating barriers to entry for other firms. These are the case of dominant position, right? Abuse of dominant position. Dominant position is okay, but abuse of dominant position is not okay, right? And this involves charging unfair prices, either excessively high or low, and discriminatory practices or unfair conditions for consumer or suppliers, right? तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन एक्ट 2022 में, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। तो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का जो आंसर है, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आंसर शॉर्ट में करना है, राइट। सो फर्स्ट यू कैन राइट दैट always you should mention a heading, right? Abuse of dominant position under the Competition
Act 2002. So you can write that under the Competition Act 2002, abuse of dominant position refers to practices where a dominant firm in the market engages in behavior that distorts competition and harms the market or consumers, right? Again you can write that a farm is considered to be in a dominant position if it holds significant market power, allowing it to control prices or output in the relevant market, right? Now again some key aspects of abuse of dominant position, like you can write exclusionary practices and कुछ है exploitive practices, right? And exclusionary practices क्या है? This includes actions like you can say unfair pricing, refusal to supply goods or services, or creating barriers to entry for other firm, right? ये सब exclusionary practices है. This includes practice like unfair pricing, refusal to supply goods or services, और या फिर creating barriers to entry for other firm. These are the exclusionary practices in abuse of dominant position. Now comes to exploitative practices. अब exploitative practices के अंदर क्या क्या जाता है? Again, this includes charging unfair prices, right? Either excessively high or low, या फिर
discriminatory practices or unfair conditions for consumers or suppliers, for consumers or suppliers, right? For example, you can say predatory pricing, exclusive agreements, time. Predatory pricing क्या है? Predatory pricing means selling goods or services below cost to drive competitors out of the market, right? तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ abuses जैसे कि predatory pricing means selling goods or services below cost to drive competitors out of the market, right? So predatory pricing means selling goods or services below cost to drive competitors out of the market, right? And जो abuse of dominant position है, वो abuse of dominant position को रेस्ट्रिक्ट करता है सेक्शन 4, राइट? एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं सीसीआई हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन एंटिटीज फाउंड अब्यूसिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन, राइट? तो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 रेस्ट्रिक्ट करता है for abuse of dominant position को. And the competition commission of India, which is called CCI has the authority to investigate complaint and impose penalties on entities found abusing their dominant position, right? So this is all about क्वेश्चन नंबर 6B पार्ट आई. तो आपको ऐसे ही आंसर को प्रेजेंट करना है. फर्स्ट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या है अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. आपको हेडिंग लिखना है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, अब्यूज ऑफ dominant position refers to practices where a dominant firm in the market engages in behavior that distorts competition and harms the market or consumers. A firm is considered to be in a dominant position if it holds significant market power, allowing it to control prices or output in the relevant market. सिंपल, राइट? तो ऐसे ही आपको सिंपल ही सेंटेंस लिखना है, राइट? एंड पूरे ऑथेंटिकेट होना चाहिए एंड पूरे एक्यूरेट आंसर होना चाहिए. ए फार्म इज कंसिडर्ड टू बी इन ए डोमिनेंट पोजिशन इफ इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, अलाउइंग इट टू कंट्रोल प्राइसेस और आउटपुट इन द रिलेवेंट मार्केट. एंड और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो और भी ज़्यादा इम्प्रेशन होगा, राइट? जैसे कि की एस्पेक्ट ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आप लिख सकते हो कि एक होता है एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस और एक होता है एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस, राइट? तो एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि अनफेयर प्राइसिंग, then refusal to supply goods or services, and creating barriers of entry for the other firm, right? And similarly exploitative practices के अंदर include होता है charging unfair prices, either excessive high or low, या फिर discriminatory practices और unfair conditions for consumer or supplier.
राइट। एग्जाम्पल ऑफ अब्यूसेस क्या है? प्रीडेटरी प्राइसिंग जैसे हो गया, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स सेलिंग गुड्स और सर्विसेज बिलो कॉस्ट टू ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ मार्केट, राइट। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है, राइट। ये सब अच्छे से याद रखना है, राइट। एंड जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर डोमिनेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 4 इम्प्लीमेंट किया गया है। सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सीसीआई, हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड इम्पोज पेनल्टीज और एंटिटीज फाउंड अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन, राइट। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6B का आंसर जो है वो प्रेजेंट करना है। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6B का जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, वो डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग ऑफ एसेट के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, वेटेज है 3 मार्क्स का, राइट। सो फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट abuse of dominant position, and thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.